Hey guys, welcome back to my channel, and if you have come here for the Boya MM1 Plus review and unboxing, you have come to a right channel. So guys, this is a box for the Boya MM1 Plus, and तो देखते हैं इसमें आता क्या क्या है. So this is a pretty cute box. It comes with I actually मैंने ये product Flipkart से मंगाया था. It was pretty good. I guess they sell the good products, I guess, so far. So this is the product, guys. As you guys can see, this is the product, and I guess it looks pretty much good. So they have this new format of the graphic that has been designed. Boya MM1 में नहीं था ये चीज़. So it's pretty nice, and at the first place, it's powered by Rycode. So it's powered by Rycode. I guess Rycode is a very nice company which makes mount shocks and microphones. So they've actually collabed with them. So I guess the mount shock would be really better than how it was before. So let's see, and let's do boom. This is good. This is good. This is all over the product. This is nice. It actually comes as how it used to come. Boya MM1 baby, it used to come like this. The setup, the mount shocks, everything used to be in the same place, same position. I mean, it's really nice, man. The product, it looks so good. So let's just see further. Let's just see further of this product and see what all are better than Boya MM1, because it says that it's a better version of it. So it comes with a mount shock. So जो पहले का था mount shock, as far as I remember, this one is a little flexible, it's a bit flexible, I guess. This is a bit flexible, and the design of it is quite different than other. दूसरा Boya MM1 में जो था mount shock, it's quite different, because as you've seen, ये जो बताया है ये powered by Rycode है ना. So this Boya has gone to collaborate with the Rycode. Right. Okay, you guys can't see, I guess. It's okay. It's fine. It's powered by Rycode, and as I'll say it again, Rycode is a company which builds up the microphones, good microphones, and mount shocks as well. So it comes with a wiring cable of it's especially for the phone or smartphone. And okay, for this MM1 Plus, it has also given this label of written microphone and phone का sign दिया हुआ है. So as you guys can see, phone का sign वगैरह दिया हुआ है right there. So before it was not there in MM1. So this is another one. So as usual, they also give us the camera cable as well at the same time. जैसे मैंने सुना है, it's the first is Boya M1, the lapel mic, which I'm using right now,
and it's Boya MM1 mic, which is better than lapel mic. So after that, उसके बाद जो आया हुआ है Boya MM Plus, Boya MM1 Plus, which is a little better version of Boya MM1. So अभी market में जो आ रहा है, like it's called Boya MM1 Pro, which is डबल डायरेक्शनल माइक, क्योंकि दोनों साइड पे it has a mic which this product and Boya MM1 used to be just one directional mic. एक ही साइड पे माइक था, पर प्रो का दोनों साइड में माइक है. You have lot of features in that. So ये केबल हो गया. Nice. It gives you the pouch of a bag like how MM1 gives you. I guess this is original product. So this is what I get in this box. So let's move to the real thing, man. The real जो जिसके लिए हमने इतना पैसा खर्च किया है उसको देखिए. Okay, they also give this certificate of qualified. Generally, like people say that ये अभी duplicates वगैरह भी बनाते हैं. ये बनाना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है. सो लाइक डुप्लीकेट कंपनीज वगैरह भी बनाते हैं, तो उन लोगों को फ्लिपकार्ट में कोई डीलर को बेच देते होंगे, फिर फ्लिपकार्ट वहाँ से उठा के यहाँ पे घर पे लेके आता है सबका जो ऑर्डर करते हैं. सो लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट. लेट्स टॉक अबाउट द माइक्रोफोन. दिस इज बोया MM1 Plus. It's good. So ये थोड़ा बड़ा है. जो पहले जो MM1 आता था उससे बहुत ही बड़ा है, क्योंकि आई गेस द हेड इज़ क्वाइट सिमिलर, पर ये पीछे का जो है ना, ये पीछे का साइड बहुत मोटा है पहले से. सो एज यू गाइस कैन सी द बोया अच्छे से लेबल किया हुआ है यहाँ पे. It also comes with this scanning code, which makes it more secure to buy things, क्योंकि ओरिजिनल लगता है ना. so it's nice. so पहले से बहुत ही बड़ा है, and even the filter right here is better than the MM1, because पहले के में जो था वो सिल्वर प्लेटेड में था, which was looking it was not durable. so अभी ये जो ब्लैक कलर का जो दिख रहा है वो ड्यूरेबल दिख रहा है. I mean like it has the durability, I guess. माइक भारी लग रहा है भाई. it's quite nice. it's अच्छा है. so you know we'll even हम देखेंगे भी इसको, ट्राई करके टेस्ट करके देखेंगे. So I can't make a difference of Boya MM1 and Boya MM1 Plus right now, because I'm using a lapel mic from Boya M1. So मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस दिखाता हूँ आपको. क्या होगा डिफरेंस. So this is it. This is the thing. So और ये डेट कैट दिया हुआ है. as you guys can see guys, डेट कैट दिया हुआ है. पर मुझे पहले जो MM1 का क्वालिटी था ना, वो क्वालिटी बेटर लगा था भाई. ये थोड़ा कच्चा जैसा लग रहा है भाई. कहाँ से उठा के लेके आके जोड़ दिया है इधर. पर द वन दैट MM1 हैड वाज रियली गुड. ये रहा बोया MM1 Plus में जो डेट कैट मिलता है हमको. दिस इज स्पेशली फॉर द नॉइस कैंसलेशन. ओके, जहाँ पे विंडी, जहाँ पे हवा चल रहा होगा, जहाँ पे आप खाली जगह पे you know if you're vlogging, so there are a lot of there is a lot of distortion, the noise that's coming to your camera. so ये माइक्रोफोन में जो आता है, कैमरा का इनबिल्ट प्रीएम्प में आता है. तो if you use the shotgun mic and put this, noise cancellation बहुत होगा. okay, so this is the dead cat, and this is the real thing that we are investing money for. so talking about this again, पहले जो MM1 में जो स्लॉट्स आता था वो एक ही आता था. वो लाइन आउट का आता था. वो जो लाइन आउट का करके एक ही वो आपको जैक आता था. अभी MM1 Plus में
आपको ये हेडसेट के लिए भी आ रहा है। तो आई हैवन यूज्ड इट प्रॉपरली, बट आई हैव used this product in the street so much so that I could differentiate between Boya MM1 and Boya MM1 Plus. So मैंने वो किया है. I'll put the video in the YouTube channel as well. उसका difference दिखाने के लिए मैं लगाऊंगा inbuilt कैमरा और inbuilt कैमरा का माइक और ये शॉटगन माइक्रोफोन में कितना डिफरेंस आता है और कितना डिफरेंस नहीं आता है, मैं आपको वो भी बताऊंगा वीडियो में रख के दिखा के. सो दिस इज़ हाउ इट कम्स. और मैं बताऊंगा कि MM1 एंड MM1 प्लस में डिफरेंस मुझे जहाँ तक लगा है. द फर्स्ट थिंग इज़ द हेडफोन सेट, ओके, हेडफोन जैक, वे यू कैन, इट सेज दैट लाइव में हम रिकॉर्डिंग करते करते समय हम लगा के वो तो नहीं कर सकते, हम सुन तो ऑडियो सुन नहीं सकते, पर इट्स अ प्लेबैक. सो आफ्टर यू एंड द वीडियो रिकॉर्डिंग, तो उसके बाद आप कर सकते हो, तब भी कैमरा में नहीं, वो फ़ोन में होगा. ओके, इट्स नॉट इन कैमरा, इट्स इन फ़ोन. सो दिस इज़ द प्रोडक्ट इटसेल्फ. इट्स रियली नाइस, इट्स रियली सॉलिड, हैवी भी लग रहा है पहले थोड़ा शाइनी था, ये थोड़ा मैट कलर में है. इट्स रियली नाइस. सो दिस इज द प्रोडक्ट. ओके, इट्स रियली नाइस. द माइक्रोफोन जो मैं अभी मेरे कैनन 80D पे चला रहा हूँ, लाइक वो माइक्रोफोन, ये लैपल माइक्रोफोन बोया M1 है. तो आई स्विच इन टू बोया MM1 प्लस सो दैट यू कुड सी अ डिफरेंस. मैं खुद को फिल्म करता हूँ तो पता चलेगा थोड़ा. सो जो आपने लैपल माइक के साथ जो ऑडियो आपने लिसन किया है और ये जो Boya MM1 Plus है, I guess like there are a lot of difference in these two mics because एक shotgun mic है और एक lapel mic है जो हम collar में लगा के it's basically a wired mic, and this is also a wired mic, but it's attached to the camera itself. It's a shotgun mic. So जहाँ तक मुझे लगता है there are a lot of difference, and अभी आपका आप जो सुन रहे हो उसका साउंड क्वालिटी अच्छा होगा बोया MM1 प्लस बोया M1 से लैपल माइक से, बिकॉज दोज आर टू डिफरेंट माइक्स. बिकॉज इसके बाद जो आया हुआ है द बोया M1 के बाद जो आया हुआ है इट्स बोया MM1. So this is the microphone that I'm using right now is the upgraded version of Boya MM1. So there would be a lot of difference. मैंने जो पहले का वीडियो जो बनाया था it was from Boya MM1. So आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो वो वीडियो भी जाके देख लीजिए, क्योंकि like you know if you want to really differentiate and buy the product, you can put your opinion and you can take your decisions wisely. So this video is generally like my intention is for you guys to take the difference out of two different mics and buy whatever you like, which whenever you like, because I would never suggest someone to buy Boya MM1 Plus because अभी ये market में it hasn't taken that hype, it hasn't gone to that hype जो market में अभी तक उतना market ले नहीं पाया है वो, like how Boya MM1 has. So अभी I guess you guys can make a pretty much difference, and that's it. Yeah, and this is with the Boya MM1 Plus. So मैं ये clip भी रख दूँगा वीडियो में, and it'll be nice to you guys to differentiate which mic is better for vlogging. So if I wanna recommend this mic, जो कोई भी इंडोर में लाइक रिकॉर्डिंग या लाइक अनबॉक्सिंग रिव्यू या जो कोई भी कर रहा है, दिस माइक इज रियली गुड फॉर देम. So guys, I guess you have found out the differentiator.
सो अभी मैंने Boya MM1 Plus को मेरे कैमरा के ऊपर से निकाल दिया है और मैं आई एम यूजिंग द लैपल माइक. सो आई गेस you guys can differentiate of how the Boya MM1 Plus is and how Boya M1 lapel mic is saying this. Bye guys, and thank you so much. I'll still be coming with new videos, new unboxing, new vlogs, so stay tuned guys and support my channel. Thank you so much. Don't forget to subscribe if you're new here. Don't forget to like and share, and if you really like the video, please press that like button and subscribe. Thank you.